Good morning, students. Today we are just going to have a session on behalf of the Vasco School. We are just going to start our session related to English literature, and this English literature belongs to class 8. Right? Here we always see many people move from one place to another. They do lot of activities in their life. The men and the women, since last so many decades, we are finding that in India it is a male dominated state. But nowadays, in this era, in this current era, we are finding that women are doing far better work than males. And if we talk about the thing, the new chapter, the very first chapter for class 8 related to English literature comes from unit first, road less taken. And the first part, first section 1 of this is around the world in 254 days. Dear students, around the world in 254 days, it is related to tell you about women empowerment in India. शुरुआती दौर में इन चीजों को समझाने के लिए सबसे बड़ी चीज हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कि ये पहला चैप्टर जो है अराउंड द वर्ल्ड इन 254 डेज, इसमें चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक इंटरव्यू सेशन रखा गया। इंटरव्यू सेशन रखा गया किसका? सवाल उठता है ये। तो जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ गोवा में 21 मई 2018 को एक इतिहास बना जब आईएनएसवी तारिणी को रक्षा मंत्री ने मांडवी जेटी पर उसका स्वागत किया। जब आईएनएस तारिणी मांडवी जेटी पर, मांडवी घाट पर गोवा के उतरा, यह दिन था 21 मई 2018। ये भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण सत्य है। और इसी कहानी को बताते हुए मैं आपको इंग्लिश के आपके पैसेज पार्ट को आपके सामने रखूंगा, जिसमें बताया गया हिस्ट्री वाज मेड ऑन 21 मई 2018 एट वेरम इन नॉर्थ गोवा व्हेन INSV Indian Naval Sailing Vessel Tarni was received by the Defense Minister at the INS Indian Navy ship Manvi Jetty. तो यहां पर उस समय की डिफेंस मिनिस्टर, आपके लिए ये क्वेश्चन होगा कि उस समय की डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? जस्ट नोट डाउन इट, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर in the year 2018? This one is your question, and I'll get back to you with that name. But wait for a moment, you have to find it by your own. So कहते हैं कि उत्तरी गोवा के वेरम में 21 मई 2018 को एक इतिहास बन गया जब INSV इंडियन नेवल सेलिंग वेसल सीरीज INSV, राइट, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, जिसको नाम दिया गया था तरनी, और वो मांडवी जेटी पर वापस लौट कर आया। लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर वाटिका जोशी, INSV Tarni became the first Indian vessel with an all-female crew to successfully circumnavigate the world. कहते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाटिका जोशी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में INSV Tarni भारत का पहला जहाज जलपोत बना जो सभी महिला क्रूज को लेकर के पूरी दुनिया की जल मार्ग से यात्रा की उसने और सफलतापूर्वक यात्रा की। वो सारे के सारे महिला क्रूज बहुत ही अच्छे से, स्वस्थ ढंग से इस 254 दिन की यात्रा को करके वापस भारत लौटे। द एक्सपीडिशन नेम्ड नाविक सागर परिक्रमा began its voyage on 10 September 2017. The team of 6 women sailed for 254 days
and covered 22,000 nautical miles. बताते हैं कि ये जो एक्सपेडिशन था, ये जो अभियान था, उसको जो नाम दिया गया वो नाम था नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा। और इसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2017, 10th of September 2017। सीरियस 10 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई। और मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप में, इस नाविका सागर परिक्रमा में 6 महिलाओं की टीम थी। और इन 6 महिलाओं की टीम ने 254 दिन, 254 डेज, 254 डेज में ये पूरी सागर यात्रा की। और जिसकी दूरी जो इन्होंने तय की, दैट वाज अबाउट 22,000 nautical miles। nautical miles। सी डिस्टेंस, सी एरिया में जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, जो नोट डाउन करते हैं, वो होता है नॉटिकल माइल्स में, राइट। एंड बिसाइड वर्तिका जोशी, दैट आई टोल्ड यू, द लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, एंड दिस सेज beside Vartika Joshi, the crew was comprised of Lieutenant Commander Pratibha Jamwal and P. Swati and Lieutenant S. Vijay Devi, Payal Gupta and Aishwarya Bodapti. So see, these are the 6 crew members. Lieutenant Commander Vartika Joshi, Lieutenant Commander Pratibha Jamwal, Lieutenant Commander P. Swati, Lieutenant S. Vijay Devi, Lieutenant Payal Gupta and Lieutenant Aishwarya Bodapati. So these are the things which comes under the introductory part of this. As I told you that it is related to an interview session of one of the एक्सपेडिटर, जो यात्री थे उनमें से एक एक्सपेडिटर की, एक यात्री की इंटरव्यू को हम इस सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में वो इंटरव्यू कवर करने में जिस मेन एक्सपेडिटर की हम यहां पर बात करेंगे वो है ऐश्वर्या बोदोपति, लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या बोदोपति, right? So next it tells you about, here is an extract of an interview that Aishwarya Bodapati had with Tonita Josh of Hyderabad Times and Times of India, and this interview was held on 31st May 2018. Interview was held on 31st May 2018. We are just going to have the conversation of this interview with Aishwarya Bodapati and Tonita